today. Welcome to the podcast, and thank you Thank all you. for being part of it. So we will start with like your childhood journey, like how's your early days, and when you first like get to know like you have some stammering issue, and like Okay. how you way forward with it during childhood days. Okay. So first of all, I would like to thanks for the opportunity and for giving me chance to come in this podcast. Okay. So if I talk about my childhood days, so ever since I have remember, I have been stammering from the age of 3, which I remember correctly. And many myths are there. I don't know if it is real or not, but uh, it's like related to that. So when I was like 2.5 years old, so we used to go in Durga Puja Mela. If you remember, in India, everywhere in Navratri, everywhere Durga Puja Pandal is celebrated. Where the nice pandal is there, the tent house there, where the uh, Durga statue there, right? So once I remember, we went there, and eventually there was some fire happened there, and everywhere it's like fire, right? My dad was so I just shouted to my dad, please, dad, let's go from this place. So we all came out from that place, but my dad was helping other people, because many people was there in between of that fire, and everything is there. People were like running hard to like come out from that place. So eventually that hit at my heart, because I was so emotional that my dad inside that pandal, and I was waiting for my dad, right? So that is the first click, which like everyone told. But obviously, when I came to Tisa, so I'll talk about that, how that myth broken. But th- that was the first thing, and so the first experience of stammering is like, I was in the class prep, where like in the old days we have nursery, we have prep, then first and second, right? So in the class prep, my ma'am asked me to come and read a conversation, right? And eventually I stammered badly in that conversation. So that's the first thing which from here I realized that I have something different while speaking. I think some noise is coming from anyone's side. Yeah, I think please like mute like someone is background sound is coming. Kindly mute it. Okay. Yeah. Okay. So yeah, that's the start of my the block and stammering, you Yeah, can call it. thank you for sharing your childhood journey. And like after childhood, like generally when move to college, like how your time at that days, like during college, Hmm. like maybe lot of struggle. We will become very conscious. Like so, how it went for you? Yeah. So I would say it's a mixed of like positive and negative part aspects. So I will share both the things so that everyone will be aware with what can be the positive things and what can be the negative things. So obviously, everyone eventually, I just told that we all have emotional baggage. As soon as we grow from the age 3, 4, 5, 6, 7, 8, then you just jump to your matrix, 10th and 12th, and then eventually in the graduation. When you come to graduation, obviously you have multiple things, because that's the first like first step of your struggle, your career making points, where you have multiple emotion, that now if I'm doing my engineering, I have to learn hard the coding. If I'm in the computer science, if I'm mechanical, I should learn all the aspects of mechanical related subject. So lot of emotional baggage. And also, if you come from your native town to other city, then you have multiple things, because you have just left your parent, your supporting hands, your brother, sister, parents. So now you are alone in the city, where you have to grow from yourself, right? So eventually my engineering started. In the first year, somehow I just got a good number. I was good in mathematics all the time, from the age 3 to my overall lag education. I was good in mathematics. So it somehow I done with my first year.
Then in second year, eventually things came from second year, because when you know that now you have multiple, viva, you have presentation on any subjects. I don't remember the name of the subjects, but we have one subject where we have to give presentation every month, or twice in a month. So that was nightmare for me, because that time I have no acceptance, I have no such awareness. I was just thinking that I was the only one in the world who have this curse. So I was, at that time I was saying curse, right? Because it's actually pinching you from the deep of your heart. It's like, when you are not able to express your thought, when you are not able to talk to your best friends, that you want to say something, you want to share something. And also when there's a group discussion, although as I told you, I'm good in education, right? So I have something which I can share to my friends if some discussion is going on. So not expressing your thoughts, not able to utter the word you want, it's a very painful in the time of graduation, right? And I remember that it was the final year of my BTech, and it was the final Viva. You all know, if you just relate to any engineering or any Viva sort of thing, the final year, right? It's a 200 marks Viva, where the external people or teacher will come and then he will see you, right? I was completely blank. I was literally feel to just jump from the first floor of my college. So it is more like I just want to, do something bad with me, because I wasn't able to utter a single word. And you know that in everyone's life, and I'm not saying that everyone, but you can find few people which are always, like pulling you, or like imitating you, just to create a laugh, just to have fun, right? So that was also things at that time of presentation. Eventually I called to my mom, that mom, can you come to my hostel, so that I'm will be able to give my final year viva, because I'm completely blank, completely nervous. And my mom came, although I had good friends at the time who also supported me. So that was a journey, Gajendra. Yeah, thank you for sharing it with us. And like we all know, like we have one moment, okay? Like we have one moment in our life where we will feel like, okay, it is enough, and that moment will cause us, like, make us to do something about our stammering. So if you can share any particular moment, like which make you, okay, I have to work on my stammering. So as I just talked about that moment actually hit me hard. It really, like, told me that, Vishal, please wake up, otherwise you will not wake up. So that was the moment, or say the kick in a positive way, you can also call it. Because we as a Indian mindset people, कहते हैं ना, we all are रेलगाड़ी का डिब्बा. When someone is pushing from you, then only you will run. Yeah, fair. If you get any sort of, like, negative thing in your life, or any kick, then you start working on that. So that was the time, Gajendra, where I have Oh, started. I was searching for speech therapy and all the things. Yeah. okay. Let's say if someone is new to stammering, okay, he's very new, he maybe just come to college. So like, what are your advice for him, like what he can do in the initial stage? I think the first thing which is very important, that don't hear anyone else clutter, because you will find few people in your class, in your group, or in your, like, group, where you will find that they will laugh at you, they will tease you, they will imitate you. So first of all, the first thing is that please don't think about those people, because they really don't care about what is going on in your mind, what you are struggling, what you are having. They don't know, they don't have a clue. So let them what they want to do, but don't be feel disturbed by them. The first thing. Second thing is that you have to be very much, mm, clean with any one of
you in your family or in your friend. At least you have to make one person in your life, that can be your mother, that can be your father, that can be your brother, sister, your close friend, to whom you can share your feeling. Because stammering is killing from inside. When you are not able to express your thought, at least you need to somebody to whom you can share that what you're feeling inside. So these two things are important. And third thing is that please and please don't sit alone. You have to work hard for your stammering. So be prepared and simply say yes to what are those things to start working on your stammering. Okay. Yeah. Thank you for your input. Like as a stammerer, like what are the small steps we all can take so we can move forward and like we can manage our stammering? If you can put some light on that. Small steps. Small steps. So first of all, practice makes a man perfect. Everyone knows it's a very universal line, but I'm again repeating it because somehow it's a true thing. Because if you think that someone will come in your life and say like ye dawa kha le tu, and you will be fine in like next one day, or someone will say and ask you that please give me 1 lakh rupees, I will cure your stammering in one day or a month or a year. So don't go in that direction, which can be a temporary, can be a fake, but it won't give you a overall or say forever cure to your thought for the stammering. Not cure of the stammering, but cure of the thought of the stammering, which is coming inside, right? So that small step, I think we are very lucky. I think the people who are listening to us, they are very, very, very lucky because Tisa is now like moving in a way, and I think expanding in a way that anyone can take support from Tisa, and also can begin their journey with Tisa. That how the things are there in Tisa, because I still remember in 2011 when I searched on Google that is there something group which is like-minded people of stammering. So I just got the name of Tisa, and from there I joined the Tisa. And I think life after Tisa was completely like changed, because as I told you, and I think everyone have the same experience that uh, if you're not aware with these organization, I think Tisa or any other organization of who are working for stammering, you feel like you are alone. And why you? The two things which always killing you is like, why me? And when you find these type of organization which help you, which give you a different foundation and a platform where it encourage you that you can meet with your like-minded people and you have a complete freedom to speak, it change your positivity, right? So the small thing, coming back to your topic, so small thing is like just connect with these type of organization, TISA, and any communication related organization which have the freedom also, that you can speak, everyone is listening to you, you just get the support, you work on your communication. Second thing is that don't stop yourself from for the practice. I still remember Gajendra, I have, I think, multiple GB of my recordings, and it was a recording from like 2008 to so far. So my two things which I always do is my practice. Practice is like I talk to myself every. So suppose if I tell you, so suppose I have to buy a packet of milk, right? And I know I have to go to some shop. During from the point A, from my home to point B to the shop, I speak to myself, and I don't care what I'm speaking to myself. It's just coming from my mouth. And even I remember that many people also think I am I a mad person, or I am completely in a different cloud. But I think it was really helping me a lot. So talking to yourself, and reason being is why I'm saying this, because we all remember that when we talk to ourselves,
we don't stammer. And that's the first identity of our positivity. Because the realness of our voices, we all speak well when we talk to ourselves, right? But when we speak to other people, any authority, then eventually come. At least this self-talk gives you the positivity that block comes or stammering comes, but eventually that's not a real. The real in you is your voice, which is fruitfully, fluently coming in your own talk. So that's the first thing which I do. Yeah, true. Practicing, Yeah, I agree. practice, and I think practicing is important every day. So how much slow? So it depends. If you have multiple blocks, because thing is, I'm not saying that if a person is stammering less or high, it's not that the person who is stammering less is not a stammerer, or a person who is stammering more is not a stammerer. If you have block, you are a stammerer. So that is not, I'm changing the mindset, but I'm just saying that when you have huge blocks and multiple blocks coming in your sound, you have you have to do your practice, but in slowness manner. Because what I see is, so I am experiencing in me the change which I've seen so far. So earlier I was speaking so fast, I was drinking so fast, I was eating so fast. So those all things are interconnected, and all the things I used to do very fast. So that's the first thing, that you just need to create a way that how you can be little slow in all the activities in whatever you are doing. And I think third small thing, fourth small thing, if I so whether you want to speak for the acceptance, or if I take it later, if I you want to take me right now, so I can just say like the fourth smaller step is to just accept yourself. That's the major and important key. Okay, sure. Yeah, thank you. Yeah. Thank you for these important points. And generally, we talk about awareness, okay? Awareness about TISA and like Mhm. how much it is important and in what manner we can create more awareness, like in school, in colleges, because now also we know it is a reality. People Correct. don't know much about this stammering. So, what we can do, like now we have different platforms. So, how we can use them in a better way to create awareness. So awareness at the time when you are kids is very, very challenging, I would say, right? So if I talk about a person who is in class 10th or 12th, if I talk about from that student perspective, so it's very hard, but it's not, you can say it's not possible. So if you are connected with TISA, right, you know that all the aspects of how TISA works, what TISA is doing, and how things are working, you eventually, like take advantage of any event in your school. So suppose if you are participating in any event, I'm not saying that that's an event for your like presentation, or say like your vocal ability, but e- even though that particular event for anything, take advantage of mic, take advantage of your opportunity. If you get a chance to talk, to speak about any other topic, but you should start with the sentence that, hello everyone, I am a person who's stammer, I am in class 10th, I live in this area, introduction. So at least from your introduction, that sentence should come. So now, many people will come to me and fight with me right now, I'm sure. Many people who are listening to me, and who are very first to this podcast, I'm sure, कि यार कैसे मैं पहली बार में अपने मतलब एक्सेप्टेंस में ये बोल दूं कि I'm a stammerer. So I think what I perceive, what I see from last 6 to 7 years, Gajendra, that even though if I say I'm a person who stammer, there is no harm at all.
even a single percent of harm, there's no harm. Because, and it help you in two ways. So rather than it would be a harm, it will be beneficial for you into two perspective. One is when you say I'm a person who is stammer, it gives you acceptance. It gives you a power. And second, you see the magic of that sentence. Suppose if you have fear, your hand is shaking, your eyes is blinking to just as per the fear which you are receiving. Eventually, you see by saying that line, it will resolve all your problem. So the first thing, you get the confidence and acceptance, and second thing, you see the magic of that word, that when you speak after that, eventually you will block in the very few words. Because कहते हैं ना कि stammering is when you are not trying to stammer, and when you accept you are a stammerer, it actually make yourself feeling comfortable enough with the situation that you will feel relaxed and you will speak very well. So I did those things, Gajendra, in my first company, in my second company, in my third company. And even though uh, today is my sixth company, so I have total 12 years of experience. My sixth company, whenever I get chance for any such thing, any initiative of my meetings, even though it's a client, not so client meeting, but so like it's a cultural meeting or say internal meeting. Whenever I get chance, I just shared that particular. Well, I am a person who's done, and I think I have feel no harm in this saying that particular word. Yeah, like we know, like you also, like we feel okay. There are so many people who are they are new, they are very new. So like we feel okay, disclosing. If we disclose, something will go down, like our proud or whatever it is. So that is, I think, the most important thing. We all will feel afraid. We will see, okay, if we tell interviewer I'm a stammerer, he will tell me, okay, please go out. So that is actually thinking. So regarding disclosing, like as a newcomer, like how they can prepare, because directly they cannot disclose to an So interview. yeah, yeah. So in that, I think just 2 weeks back, somebody asked me the same thing in WhatsApp. I don't remember the name of the person, but he was because he was also giving interviews in companies, and he's also new to that, right? So he asked me that how can I do that? So I just replied him that how you can be a little diplomatic in that, because yes, you are right that you can't say just you sit in your chair and your interview start and you are saying that I'm a stammerer. So it's not gonna work, right? It's somehow not gonna work. So you have to be put in between of your introduction. It's not like you start pitching in that. So like what I used to do, if I told you my story when I was a beginner, right? In that, so you know that when you are giving interview, you have your name, you have your qualification. Then, in the section of when you're sharing how hobby related thing, right, or extra curricular activity, in that you just uh, like put those particular points. So what I used to do is like my extracurricular activities are play cricket, I sing song, and I also a part of Tisa, the Indian Stammering Association, who works for the person who's stammer, and I'm also a person who's stammer. So like in that way, you just place that point, and eventually, some people ask you that can you just repeat what our stammering is? So then you can just jump and say about your stammering or say about TISA. So in that way, you are doing two things again, right? First is awareness about TISA, then second is you are accepting yourself. So yeah, this is a big achievement. Yeah. Okay. Now people are asking to ask some questions in Hindi as well. So Okay, now we sure. ask in Hindi. No तो problem. जनरली हम लोग सो बोलते हैं ना, लाइक Hmm. एक्सेप्टेंस. सो हाँ जी. ये बोलना बहुत आसान है, एक्सेप्टेंस. और व्हाट पीपल विल थिंक, लाइक व्हाट वो लोग क्या सोचते हैं,
अरे हम तो अपनी स्टैम्पलिंग क्योर करने आए हैं और हाँ तुम बोल जी। रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए। हम्म। सो फॉर दोज पीपल आप क्या मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक्सेप्टेंस के बारे में? एक्सेप्टेंस एक अपने में बहुत बड़ी चीज है। इवन आज तक मैं भी ये बोल सकता हूँ कि एक्सेप्टेंस 100% कर पाना इज टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन मेरा मानना उसका अगर आप 20 से 25% भी कर पाते हो ना, तो भी आपको वो इतनी ऊंचाइयों इ- इ- इतनी मतलब आधारशिला में पहुंचा देगा कि जहां पे आप अपने हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। अब बात आती है कि एक्सेप्टेंस कैसे करना है, क्या करना है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह गाते ही रहो कि मैं हकलाता हूँ, ये नहीं होता एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये भी होता है कि आप कितना लोगों को सुन सकते हो और कितना दूसरों की बातों से अ- अपने थॉट्स को स्टेबल कर सकते हो। क्योंकि लोग आएंगे, लोग आपकी बातों को खराब करेंगे, या आपके साथ भी ऐसा मोमेंट होगा कि आप किसी एक मीटिंग में बैठे होगे, बहुत बड़ी मीटिंग में, जहां पे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे होगे और 4 मिनट की आपकी स्पीच में आपके 3.5 मिनट बहुत अच्छा बोला, लेकिन वो लास्ट के या बीच के 20 सेकंड आपके ब्लॉक आ गए। नाउ it is also a acceptance that how soon you can leave those negative thoughts। जब आप उस मीटिंग से बाहर आओगे तो ऑब्वियसली आपके मन में चल रहा होगा, यार मेरा पूरा अच्छा गया, मैं बस 2 मिनट वहां पे सही नहीं बोल पाया और इसने मेरी इमेज की धज्जियां उड़ा दी, राइट। बट अगेन फिर आपका आता है एक्सेप्टेंस कि एक्सेप्ट योरसेल्फ हु यू आर एंड नाउ वर्क इन द अदर थिंग विच इज कमिंग इन योर लाइफ। और आप देखोगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है स्टैमरिंग की वो ये है, रिलैप्स ऑफ स्टैमरिंग। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो भी जिन्होंने कंट्रोल पा लिया है या जो मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई ये बोलता है ना कि आई एम कंप्लीटली मैनेजिंग माय स्टैमरिंग, आई थिंक यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। कहते हैं ना वो जो आइसबर्ग का पहाड़ था जिसमें हम मतलब बोलते हैं ना, जो बाहर है वो तो हमें विजिबल है लेकिन जो अंदर है वो नहीं विजिबल है। तो आज अगर गजेंद्र या मैं आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं तो वी नो दैट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम ज्यादा ठीक से नहीं बोल पाते या ठीक से बोल पाते हैं, हमें पता है ये चीज। बट हाउ टू कम अप फ्रॉम दैट particular relapse of stammering, how to come up from that negative thoughts which are coming due to the situation। कैसी सिचुएशन आई कि कुछ ऐसा घट गया आपके साथ, या आपका इंटरव्यू इतना खराब हुआ कि आपका मतलब अगले दिन से आपकी स्टैमिंग इतनी बढ़ गई कि नाउ यू आर अप्रोचिंग पीपल कि भाई मैं क्या करूँगा। अचानक से मैं अच्छा बोला था लेकिन एक इंटरव्यू के बाद मेरी स्टैमिंग इतनी खराब हो गई कि नाउ आई एम नॉट एबल टू रीच टू माई लेवल। तो वहां पर भी एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हाउ यू एक्सेप्ट दैट डेविएशन इन योर स्टैमरिंग एंड नाउ हाउ यू कैन वर्क अगेन। तो प्रॉब्लम गजेन यहाँ पे ये आती है कि आप जितना ज्यादा सोचते हो उतने ड्यूरेशन तक आपकी स्टैमरिंग गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। और जितनी जल्दी उस सिचुएशन से हुए हरास जो आपको हुआ है, मतलब द डेविएशन और व्हाट यू कॉल इज लाइक द फॉल इन योर स्टैमरिंग जो आपको हुआ है, मतलब उस सिचुएशन से, उसको जो वहां से नेगेटिव सोच चल रही है उससे जल्दी आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हो। आप जितनी जल्दी उसको लेट गो बोलोगे या जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी यू विल कम बैक टू योर ओन फॉर्म। आज की डेट में मेरे साथ ये अप्रोच तो आ चुकी है मेरे साथ, दैट इवन दो कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई या आती रहती है। देखिए सभी स्पेस में है कि सबके साथ जॉब है, बीवी है, बच्चे हैं और सिचुएशन है। बस उस मोड़ से, उस फॉल से आपको कितनी जल्दी बाहर निकल के फिर वापस आना है वो बहुत जरूरी। और आप ये भी देखोगे, the moment you understand your acceptance and that particular acceptance, you will see कि वो जो 2 दिन का जो ड्यूरेशन था कि जहां आपको 2 दिन लगते थे वापस आने में, वहां शायद अगले काफी समय के बाद जब आप एक्सेप्टेंस को और समझोगे तो आप 1 दिन में आ जाओगे या 1 घंटे में आप दोबारा से आ जाओगे अपने फॉर्म में। तो वहां तक आने का जो समय है वो भी एक एक्सेप्टेंस ही बताता है। तो ये पूरा एक जो लाइफ साइकिल है ना एक्सेप्टेंस की, इट्स अ वेरी बिग, राइट गजेंद्र। या राइट।
या जैसे हमको पता है लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जनरली हम लोग हाँ इसके जी। बारे में बात करते हैं, ये कितना हाँ जी। इंपॉर्टेंट है फॉर ए स्टैमरर, और स्टैमरर्स को कैसे यूज कर सकते हैं इन अ बेटर हाँ वे, जी। राइट। चाहे वो किसी भी सिटी में हो जहाँ पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। देखिए, मेरा मानना है एसएचजी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सपोर्टर। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई सपोर्टिंग हैंड है या अगर कोई एक ऐसी चीज बनी है, टीसा ने जो बनाई है, जो मैजिकल चीज, वो क्या है? वो एसएचजी है, सीधे शब्दों में। आपको इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ अपनी जर्नी को, और आई थिंक इससे सभी लोग सीख सकते हैं। देखिए, एसएचजी आप ज्वाइन करिए। आई एम मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सभी ज्वाइन करिए, लेकिन एसएचजी केवल ज्वाइन करने से नहीं होगा। जब तक आप एसएचजी में थोड़ी कंटिन्यूएशन में आओगे नहीं, और उसके बाद जो उसमें एक नए नए रोल है वो आप लोगे नहीं, वहां से ट्रांजिशन आपको नहीं दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2012 में मैंने एसएचजी मीटिंग स्टार्ट की थी, और 2014 में मैंने वर्कशॉप लगाई थी और एनसी का पार्ट बना था, और 15 में फिर मैंने एनसी ऑर्गेनाइज करी थी। तो वो जो 3 साल में जो एक ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन बोल लो आप, जो आया, वो कैसे आया? That is just because you take all the advantage of TISA. Advantage क्या है? You just come as a member in SHG meeting. In 1 month or 2 months, you will lead the SHG meeting. You work as a what do you call that? Host of the meeting, right? हाँ, वो बनते हो। फिर उसके बाद अब जब होस्ट आपने 5-6 कर लिया, then try to part of any workshop or any event जो टीसा के होते हैं, then वहां से आपको एक another ट्रांसफॉर्मेशन मिला कि नाउ यू आर मैनेजिंग अ स्मॉल डिपार्टमेंट, चाहे वो फूड का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जो भी हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब व्हाट यू कॉल अकोमोडेशन, तो वो डिपार्टमेंट हो, तो वहां से एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। एंड देन इवेंचुअली जब आपको ये 3 पॉइंट से आप गुजरोगे, फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है, नाउ आई वांट टू आल्सो ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप और अ एनसी। सो आप पहले वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करोगे, वहां से आपको एक ऐसा चीज आएगा दैट बिल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, दैट यू कैन organize any event with which has around 20, 15, 30, 50 people. और इवेंचुअली जब आप वो वर्कशॉप कर लेते हो ना, जब आप देखते हो कि 20-25 लोग जो आए और उनके फेस में जो मुस्कुराहट आई आपके पूरे प्लान से, एंड जो वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, मतलब हर चीज से, राइट? वो आपको एक और इनपुट में डालता है कि नाउ यू विल डू एनसी इन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो जब जब आप एनसी करते हो, देन अगेन यू हैव अ ह्यूज एक्सपोजर, you have a huge liabilities, responsibilities, at how you manage eventually the people around the world also, and Indian people as well, right? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स है, ये जो टीसा के सपोर्ट से हमें मिला है, हाउ यू जस्ट like click and check on those points, and how you see your transformation is unbelievable. So that's the way how we all can grow. जैसे अभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला, लाइक किसी मेंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके अपना बेनिफिट्स मतलब क्या होते हैं देखिए, फॉर नेशनल ग्रोथ। कॉन्फ्रेंस मैं तो शायद यहाँ पे कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पिछले 5-6 साल से इतना एक्टिव तो नहीं रहा टीसा में, लेकिन एनसी के लिए मैं ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ। एंड रीजन बिहाइंड दैट, टीसा इज अ फैमिली, यू कैन से अ फैमिली। जब आप टीसा में आते हो ना, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। और कहते हैं ना कि एक तो आपके फ्रेंड्स है जो कॉलेज के फ्रेंड्स है, ऑब्वियसली उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी, क्योंकि वो आपके जस्ट मतलब क्लोजर फ्रेंड होते हैं, बट स्टिल you will find many like-minded people, many good soul in Tisa, जो आपके एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। और वहाँ से जो फ्रेंडशिप होती है, तो वो फ्रेंडशिप और ट्रांसफॉर्म होती है जब आप वर्कशॉप में आते हो, तो वहाँ पे अदर सिटीज के भी लोग आते हैं, तो उनसे भी बॉन्डिंग बनती है, तो यू इवेंचुअली फील लाइक यू हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन ऑल द सिटीज। और जब कॉन्फ्रेंस में आते हो, यू गेट अ गुड एक्सपोजर ऑन दैट, राइट? और एनसी का जो वाइब है ना, वो अपने में मतलब बहुत ही अलग है, क्योंकि एक एक एक्साइटमेंट होती है कि 3 दिन सबको साथ में रहना है। कहते हैं ना कि, और सभी अपना एक प्लान करके आते हैं, दैट नाउ 3 दिन पूरा हम टीसा को दे रहे हैं, लाइक कंप्लीटली 3 days डेडिकेट टू टीसा एंड द मेंबर्स हु आर कमिंग इन दैट।
So eventually you will have good, friends. You will have fun in night. You will have people जिसको आप शायद मतलब अपना आइडल मानते हो या आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं मिक्स फ्रूट मिलते हैं उसमें। मतलब जिसको जिस तरह का बंदा चाहिए वो उसको वहां मिल जाता है। और फिर ये सब छोड़ने के बाद जो टीसा के ऑर्गेनाइजर हैं, जो जो गेस्ट हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मतलब मैं अगर आज टीसा को मतलब इस तरह से देखूं 2012 से लेके 25 तक, गजेंद्र, सो व्हाट आई सी इज दैट कि मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो रियल में हमारे लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, दैट हाउ दे एक्चुअली रीच टू दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन। कि काफ़ी सारे एंटरप्रेनर हैं, काफ़ी सारे आईआईटीएन हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एरोस्पेस में या फिर अपने अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छे रोल पे आगे जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं इतने सारे जो एग्ज़ाम्पल्स अगर वो लाइव एक छत पे आ जाते हैं, तो आपके लिए तो वो फिर सब कुछ है, राइट? कि आप उनसे कुछ भी सवाल करो, कुछ भी कहीं भी जाओ, तो ये है। Yeah, thank you. Yeah, thank you for like all your inputs. And now we have like questions from the people. So people ओके, like whoever have the question, you can raise the hand, and then we can go one by one. Okay, you can raise your digital hand. मनोज यादव। Yeah, Manoj Yadav ji. Hello, Yeah, am go I ahead. on? Yes, yes. है मनोज। Okay. I मुझे आपकी okay, now you are visible. Okay, sir. I first want to congratulate you for your journey and like what you have achieved in your life. या And I actually can relate with you because I'm in a job and ओके, the same thing goes on with me also. Like in presentations also, it's a huge presentation and what I don't know whether it's right or wrong, but the means in our office, like we have presentation on a weekly basis, and in ओके, that presentation, several departments give the presentation, and mine is the means the biggest one. ओके, so so I don't know means it's good or bad, but I believe like you have just said, now it's good actually. You can it depends on the way how you look at it, how you या approach it. If you keep on going away from it, then it's not good. You have to go and face it. And like one thing that I liked in what you said, uh, that like in a meeting, there would be some moments where you would stammer. It is not possible to give all the presentation very fluently. It would not be possible. So sometime you would stammer, but you have to accept yourself that yes, okay. If I stammer, then it's also okay, no problem. And we have to give ourselves a chance. And and also, yeah, like one thing you have said that is all also happening to me. Like earlier, what I used to think for two days after stammering that why it has happened to me. But now that time has been means it's very less than one day. So it's time. The time has is very less now. So, I believe we are on the same path. What you have just said, I actually completely relate to that. What I'm doing currently is I'm trying to slow down. So when I slow down, I am very relaxed. So that thing I'm doing. And what more can you give, Mr. Madhu? What advice more you can give? Like we ओके, can do all these things, and is there something else? yeah, sure, sure, sure. So in terms of the office presentation and meetings,
Uh, Three things which I have been always do. So as I told you, that as you just now repeated, right? That eventually we have blogs, we have things, but how you you can say what do you call that? How to uh, after the meeting when you come to your home, how you perceive things. So I'm not saying that you just need to count your number of blocks, right? I'm not saying that. After the meeting, you just need to identify the retrospection. So what all those things can be improvised, what all those things can be in a different mannerism I can do. So in my case, I sometime use voice modulation. I think in the Toastmaster when I joined in back then in 2016 15. So that really helped me in a way that how you can use voice modulation in your presentation, and it really helps. It attracts people as well, and also it create a connection when there is block, how you can like slow down and you can speak loud, and then people think you are doing well actually. And eventually when you get positivity from the people, right, again you see a good way. So I do one thing, always post meeting I do my retrospection, I do write the points with which I can improve, and again in the next meeting I improvise that particular thing, not stammering other than your stammering. So suppose uh, you are giving a presentation on any topic, there might be chance other than stammering you felt like your topic, your content was not really good in that particular point. So in the next meeting how you can improvise that particular point, how you can, because what I see in presentation, the backbone of your presentation is your knowledge. If your knowledge for your presentation topic is beyond, that always gives you a support from the back. So I would say first thing is your voice modulation, how you present yourself in the meeting. These two things are a positive aspect. Third is your content should be very much like understood from yourself actually, क्योंकि आपको जो बोलना है वो आपको कितना क्लियर है, आप कितना उसको इफेक्टिव तैयार किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तीन चीज का जो मिक्सचर है, that will help for sure. Yeah, thank you. Next we have a question from Manoj Rathore. Manoj. Hi Manoj. Hello, sir. Hello. Hi. Ji. Okay. So I have a 4 to 5 question. Oh my God. Okay. Well, can you Yeah, just Manoj. mix all Like, four five yeah, just a questions? question, just a point. Just try to keep it short because we have also other members. Okay, so they are Yeah. in queue. So my first question is what you do when you feel frustrated and Oh, yeah. so I think I would show you my camera so that you can see. Oh, I'm not able to. Oh, okay. So let me just give. So you will understand that what I'm trying to say. So you can see. Okay, behind that particular light, you can see the guitar. So it's my best friend in the frustration time, or it's say like the bad time. And also you can see the softbox light. This is a thing. So I love speaking to myself. So these two things I always do: my guitar and singing, and that my self talk. Yeah. And my second question is what you do in daily base to your stammering. Okay. So in your stammering, so I daily basis I try to talk to my wife whenever I get chance, A- and I tried hard to not change the word while speaking to my wife. Reason being is I'm telling you, for a person who stammer, it's very normal that we change the word in if we feel we have a block in that particular word, right? It's many a times we do. I think still
whenever we are in office, we are in, talk with very high authority people, we change the word. So my practice is like when I talk to my wife, I don't change my word. So so even if the block comes, I welcome my blocks. At least I have a person in the earth to whom I can speak freely, right? Yeah. And what you do when you have a hard block, like that block you don't have to speak any single word. You have to write and say that is my question and that is what I am going to say. That is hard block. Okay. So hard block story is like I choose a technique called post block correction. So post block correction is like first you have a huge block and you stop yourself, Acha. and then again you try. So eventually that works somehow, and then I manage my stammering. And that even if you see right now, even if I'm talking, if I have a block, I just do block in a slow manner or a long manner. Then again I repeat that word. Yes, Mitesh, Manoj. Acha. My last question is uh, last of month, yeah, last of a week. How you remark, yeah, how you rate your feeling, your mind. Okay, in this week, I have less stammering. In this month, I have lot of stammering. How you rate? हम्म, मुझे लगता है जब आप एक्सेप्टेंस पे वर्क करने लगते हो ना, या एक्सेप्टेंस के साथ साथ ना लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहीं ना कहीं लाइफ के ऐसे फेज में हूँ जहाँ मेरी 5 साल की बेटी है, मेरी वाइफ है, आई हैव अ फैमिली, एंड आई एम, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, इफ यू आर अवेयर और नॉट, आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी एज वेल जस्ट अ मंथ बैक। सो अभी क्या है ना, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना उस बिजनेस में कि इन सब चीजों का सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और आई थिंक ये सबसे बेस्ट पार्ट है जिंदगी का। जिंदगी में इतने काम हो ना, हर इंसान के पास इतनी इन्वॉल्वमेंट हो कि उसके पास टाइम बचेगा ही नहीं स्टैमरिंग को सोचने का। और अगर स्टैमरिंग को सोचने का टाइम नहीं बचेगा ना, तो ये जो मैं बता रहा था ना, लेट गो वाली फीलिंग, वो अपने आप ही आ जाएगी। या या मनोज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। Thank you. थैंक यू Next मनोज we have फॉर नाइस Kamaljit. क्वेश्चन। Kamaljit. Yeah, Vishal ji, good evening. My name is गुड Kam. इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग Kam. कमल जी। I have two questions. One question is when generally I get stuck in the blockage of my name. Uh, ओके। when there are some meeting of 40 to 50 people and somebody asks my name, then generally I stuck in the name, first name. And हम्म। तो आप पहले सेकंड वाला भी पूछोगे कि मैं अभी पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दूं? second जैसा वाला आपका। मैं भूल गया, एक्चुअली मैं अच्छा, क्वेश्चन था भूल गया मैं सेकंड वाला। कोई बात नहीं। तो मतलब इतना माइंड इतना रश है कि हम भूल जा रहे हैं, बट एनीवे जब आपको याद आ गया तो पूछ लेना। तो पहले का क्वेश्चन है, ये सबके साथ होता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग सबके साथ, बट मेरे साथ तो था। आई थिंक टीसा की हम जब शुरुआती मीटिंग में थे 2012 में, 2013 में, तो ये था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमने प्रैक्टिस की टीसा में, एक मतलब हमारे सीनियर मेंबर थे, उन्होंने ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करवाया था हम लोग को कि मेट्रो टिकट लेते समय वॉलंटरी स्टैमरिंग करना है। मतलब इट्स अ वेरी हार्ड, क्योंकि मैं भी तब एकदम नया था और मेरे लिए भी एकदम से ये करना बहुत टफ था। तो मेरा जो सीनियर था आशीष अग्रवाल, आई थिंक इफ फ्यू ऑफ यू रिमेंबर, इट्स अ मोस्ट सीनियर मेंबर आशीष अग्रवाल, ही जस्ट पुट मी इन दैट क्यू एंड से लाइक तू 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 अब बोल, ऐसे ही बोल तू। तो वो जो एक करेज होती है ना, वॉलंटरी स्टैमरिंग कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही मार सकता है, ठीक है, कहते हैं ना, सेम स्टैमरिंग को स्टैमरिंग ही मार सकता है। और आई थिंक अगर आपने वैन राइपर, जो वर्ल्ड के पहले स्पीच थेरेपी जिन्होंने बनाया है, उनका नाम है वैन राइपर, उन्होंने स्टैमरिंग की जो परिभाषा दी थी वो दी थी, स्टैमरिंग इज व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू स्टैमर। हकलाना वो है जब आप नहीं हकलाना चाहते।
तो नाम में सबसे बड़ा जो फियर है ना वो यही है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एटलीस्ट कमलजीत, आप, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सीधे आप सीढ़ी के 5वें पड़ाव पे जाओ, पहला स्टेप लो आप। एटलीस्ट आप ये जो, अगर आप मेट्रो या फिर किसी भी कभी भी किसी भी जगह ऐसा चलते हो तो आप ट्राई करो वॉलंटरी स्टैम्परिंग करने का। उससे बड़ा मतलब इसका दवा नहीं है, मतलब इस नाम वाले फियर को रिमूव करने का, क्योंकि आज के उसमें डेट में नाम बोलने में नहीं दिक्कत होती। विशाल जी, उसमें क्या है, जैसे सपोज करो आई स्टार्ट वॉलेंट्री स्टैमरिंग इन बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन, वहां पे एक मतलब आई मीन द इजी वे, मैं कंफर्ट जोन में होता हूँ। लेकिन ठीक। व्हेन यू सिटिंग इन द कंपनी मीटिंग, सम हम्म। जीएम्स वीपी इज देयर, तो वहां पे वॉलेंट्री वॉलेंट्री स्टैम्परिंग करने का करेज भी होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने जानबूझ के वहां तो नहीं कर स्टैम्परिंग। सकते आप, बट एटलीस्ट जो मैंने बोला था कि अपने स्टैमरिंग को आप एडवर्टाइज तो कर सकते हो। अगर आपका कोई कोई मतलब ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, एटलीस्ट आप अपने को एडवर्टाइज तो कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी माइंड को ये मैसेज करने की, क्योंकि पता क्या होगा, मैं बताता हूँ। जब तक ना वो एक्सेप्टेंस का एक ठहराव नहीं आएगा ना माइंड में, तब तक वो आपका जो फियर फैक्टर है ना नाम को लेके वो रहेगा। वो जब आपका जो आपका फियर फैक्टर है ना वो जब तक नहीं जाएगा तब तक वो रहेगा। तो उसको जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको छोटे स्तर पे या फिर कभी भी ऐसा मौका मिल रहा है उस स्तर पे आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले मेरे भी मतलब ऐसा था, मैं आपको टू बी फ्रैंक बताता हूँ, मेरे बहुत सारे मतलब आज तो मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि मेरा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें मैं ज़्यादा अटकता हूँ। बट अगर आप मुझसे 10-12 साल पहले पूछते तो मैं आपको कम से कम 8-9 वर्ड बता सकता था कि जिसमें मुझे ब्लॉग आता ही आता है। वो कहीं न कहीं इसलिए गया ना, कहीं न कहीं वो हमने जो प्रैक्टिस की उस टाइम में, एक्सेप्टेंस की, जो उसका मिक्सचर था, उसने कहीं न कहीं इस चीज़ पे वर्क किया। तो माइंड में वो थॉट कि मुझे पा बोलने में अब स्टैमरिंग होगी, वो कहीं न कहीं गुज़र गया अब। तो वो ब्लॉक ही नहीं आ रहा उसमें पा में, बट पहले था ये चीज़। तो कहीं न कहीं आपको उस माइंड के फ़ियर को निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप कितना एक्सेप्टेंस और कितना आप अपने वॉलंटरी स्टैमरिंग को कर सकते हो। जी, जी कमलजीत। Okay, thank you. Next we have Raju. हाँ जी, हाँ राजू। हेलो। राजू हाय। हेलो सर। हाय राजू, एम आई आई एम ऑडिबल? ऑडिबल। यस, यस, यू आर ऑडिबल, आई एम आल्सो। सर, मेरा सवाल सर ये था कि ऐसे कि मैंने एक बार स्पीच थेरेपी 1 साल पहले लिया था। तो हुँ, उन्होंने सर कहा था कि जब आप बोल रहते हो तो आप अपने सांसों को फील फील करते हुए बोलो। जी, लेकिन जी। लेकिन लेकिन सर, जब एक्चुअली सर, जब मैं बोलता हूँ या फिर कहीं भी अपने या अपने कॉलेज में या फिर कहीं भी सर, तो मैं सर हुँ, उस वो अपने अपने सांसों को सर मैं फील ऐसा मुझे लगता है कि इस मेरे सर जैसे सांसें रुक गई है सर। इस इस तरीके की मुझे फीलिंग आती है। अ, उसके लिए सर हाँ, उसके लिए सर क्या करना होगा मुझे? आप अभी एसएचजी मीटिंग में आप आ रहे हो? मतलब इफ आई वांट टू आस्क यू दैट फ्रॉम व्हिच सिटी यू बिलॉन्ग राजू? किस हाँ, शहर से आप बिलॉन्ग करते हो? सर मैं जहानाबाद बिहार से हूँ सर। बिहार से हो तो आई थिंक बिहार में तो अब मीटिंग अच्छी से मतलब चलने लगी, इफ आई हाँ टॉक सर, अबाउट। ऐसे जी तो मीटिंग हो। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो आप उसमें? हाँ सर, मैं रेगुलर तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। मैंने किया है सर पार्टिसिपेट। देखो कहीं न कहीं राजू, आई जस्ट वांट टू से जो मैंने अपने इंटरव्यू के बीच में बोला था कि आपको कहीं न कहीं अपने प्रैक्टिस, अपनी डिसिप्लिन को भी साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बहुत
अच्छे से हार्ड वर्क करते हो ना इस एक्सेप्टेंस के साथ, तो आपको बहुत उसका जो आउटपुट है वो मिलता है। और ये जो ब्रेथ वाली दिक्कत है ना, ये मैं पहले भी फील करता था और आज भी फील करता हूँ। बट एक्चुअली मैं बताऊँ ना, जब आप अच्छा बोलने लगते हो ना, तो साँस भी अपने आप सही चलने लगती है। ये एक बड़ा ही अजीब चीज़ है। और जब ब्लॉक आता है तो आपको लगता है कि मेरी साँस भी सही नहीं चल रही है। तो अगर मैं अपने से सवाल करूँ, मतलब अपने स्वयं से सवाल करूँ कि क्या ये साँसों की दिक्कत है? तो मेरे पास जो जवाब आता है ना, वो आता है साँसों की दिक्कत नहीं है, बट जो सोच चल रही है मन में ना, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है? तो जैसे मैंने बोला ना कि जितने भी क्लटर्स हैं, जितने भी आपके इमोशनल बैगेज हैं, जो अंदर मन में चल रहे हैं, अगर अ, आपको इसके बारे में और जानना हो, तो आई थिंक आइसबर्ग इंटरव्यू का एक मेरा यूट्यूब में टीसा के वर्कशॉप में मैंने एक वो किया था सेशन, तो उसपे मैंने एक बनाया हुआ है, तो आप उसमें देखोगे ना, उसमें एक मैंने आइसबर्ग रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। तो कहीं न कहीं वो जो आइसबर्ग के नीचे वाला पार्ट है ना, उसपे हमें वर्क करना है राजू। उसपे वर्क करने का मतलब उसमें 6-7 पॉइंटर्स हैं जिनको आपको समझना होगा दैट हाउ वी कैन मेक आवरसेल्फ फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल अ, कम बोलने वाले बच्चे से ज़्यादा बोलने वाला बच्चा बनना है हमें। क्योंकि अभी तक पता है क्या है? हम सब शाई रहते हैं स्टैमरिंग को लेके। हम लोग कम बोलते हैं, अपने आप को ओपन नहीं करते, अपने आप को उस तरह से नहीं समझते कि हम ओपनली किसी से कुछ पूछ सकें। आज अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि घड़ी मैं घर पे रख के आया हूँ, फ़ोन रख के आया हूँ और मेरे को टाइम पूछना है, तो हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, पता नहीं मैं वहाँ बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। तो कहीं न कहीं ये सब जो थॉट्स हैं, ये जो आइसबर्ग के नीचे का पार्ट है ना, इसको समझना राजू बहुत ज़रूरी है। एंड इवेंचुअली जब आप इसको समझोगे ना, तब आप अपने अंदर जो चेंजेस लाओगे, बट स्टिल आई वुड से कि आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, एक्सेप्टेंस को समझिए, टीसा के थ्रू, एसएचजी के थ्रू और मीटिंग में ज़रूर जाइए आप। नहीं तो ऑनलाइन हमारी जो हमारी मीटिंग होती है, उसको ज़रूर अटेंड करिए। मैंने लगभग गजेंद्र, मैंने अराउंड 12 से लेके 2017 तक मैंने नॉन स्टॉप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100% की बात की जाए तो 95% मैंने सारी मीटिंग्स अटेंड की है। हाँ, तो मैंने कभी छोड़ा नहीं किसी मीटिंग को, क्योंकि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही रहता है। और और सबसे बड़ा जो है, चांस मिलता है कुछ करने का। ठीक है, तो आप इसको रखिए और आप अगर आपको मुझे डिटेल में बात करना है तो यू कैन जस्ट पिंग टू मी। ठीक है, देन वी कैन टॉक एंड आई कैन गाइड यू द पर्टिकुलर स्टेप्स। Okay, thank you. थैंक यू। Gaurav, do you also have some question? Gaurav Sajan, Gaurav, गौरव है, आकाश है, Uday, उदय है, Subhash. सुभाष है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, सो लेट मी नो। Okay, if you people don't have, like, I have one question. हाँ हाँ गजेंद्र, श्योर। If you want to give one advice to a stammerer, sir, what that can be from your end? योर वन थॉट, आई थिंक इस वर्ड को जरूर याद रखो कि द रियलनेस इन यू इज यू कैन स्पीक वेल। हम अगर ये छोड़ देंगे सोचना या समझना कि हम अच्छा नहीं बोलते हैं, तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और इसका सीधा सा इसका जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है, जब आप अपने से बात करते हो तो आप कितना अच्छा बोलते हो, एंड दैट्स रियल इन यू। सो अपने रियलपन को अपने पहचानो, एंड देन यू डू ऑल द एक्टिविटीज व्हाट यू नो फ्रॉम टीसा, व्हाट यू नो फ्रॉम द पीपल इन टीसा, एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। Manohar Dhagar ji, do you have some question for us? थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले तो मैं विशाल जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी थैंक यू। बातें रखी, बहुत इंस्पायरिंग थी। तो हाँ, मेरे माइंड में अभी तो कुछ क्वेश्चंस नहीं
आ, नहीं है। तो बस मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको। थैंक यू सो मच मनोहर, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने माइक अपना अनम्यूट किया और बोला, क्योंकि ये साहस भी जुटाना गजेंद्र एक टाइम पे बहुत ही टफ होता है लोगों के लिए, राइट, कि मैं माइक अनम्यूट करूं एंड आई हैव रेज माय हैंड टू स्पीक। सो इट्स अ ग्रेट थिंग मनोहर। थैंक यू। Okay, there are also other people. If you have any question, because we are in last part of our podcast, and if you don't have any question, आई थिंक we can. सुभाष Okay, ने शायद रेज किया है। Shubhas, go ahead. Yeah, go हेलो ahead. सर। हेलो सुभाष। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर हिम्मत नहीं आती बात करने की, खुल के बात करने की। नहीं कर पाता वहाँ पर। और मुझे वीडियो बनाना है, व्लॉग बनाना है, लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं बना पाता वो चीज़। तो यही मेरा क्वेश्चन है। नहीं, तो अभी तो पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि तुमको फियर है अभी वहां तक जा पाने का, कि तुमको ये फियर है कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा? फियर किस चीज का है? ना ना अच्छा बोल पाने का, कि ये एक स्टेप लेने का कि मैं वहां जाऊंगा ही नहीं? मतलब जाता तो हूँ, फिर वहाँ जाके हिम्मत नहीं आती, बोल नहीं पाता। बहुत अच्छा, वो लगता है, फियर एग्जाइटी हो जाती है, डर ओके। लगता है। सुभाष, अभी आपको टीसा में आए कितना समय हो चुका है, इफ आई आस्क यू? कितना टाइम हो चुका मेरे है को आपको? 2 महीना। और आपने एसएचजी मीटिंग अटेंड करी एक भी, मतलब अभी तक? अभी तक नहीं की मैंने। अच्छा, ठीक है। तो कोई नहीं, आप वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड रहो, जो वर्चुअली हमारी मीटिंग होती है वो अटेंड करो। अब आप साहस की बात कर रहे हो, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, एक स्टेप तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा दोस्त। मुझे आज भी याद है जब मैं थेरेपी के लिए मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यू में बताया था ना, मेरी स्टैमिना एक्सट्रीम में पहुंच गई थी, जहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने मतलब एक मंजिले से कूद जाऊं। उस टाइम पे मैंने फिर जब वापस रूम में आया, तो मैंने सोचा स्पीच थेरेपी में जाऊंगा। और वो था सेक्टर 19 नोएडा में, सेक्टर 19 बोलो 19 बोलो। तो उस टाइम मुझे ऊ बोलने में भी दिक्कत थी और 19 बोलने में भी दिक्कत थी। तो अब तुम समझो कि कैसे मैंने वो सिचुएशन मैनेज करी होगी। तो मैंने मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं जाऊंगा या तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अब मेरा था कि यार जिंदगी में कुछ ना करना तो मतलब एक तरह से अपनी जिंदगी खत्म कर लेना, है ना? बट कुछ करना है तो कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा अपने लिए, क्या होगा मेरे साथ, मेरा आवाज भी आएगा, 1 मिनट लगेगा कि 1 घंटा लगेगा कि 1 दिन लगेगा? सो आई हैड नो क्लू एट ऑल। बट मेरा था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है एंड आई हैव टू टेक दैट चार्ज। तो मैं गया, मैंने ट्राई किया। 19 बोलने में मुझे जो दिक्कत आई वो मुझे आज तक गजेंद्र याद है, और जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी पहली सीढ़ी थी मेरे स्टेप लेने की, सुभाष। और उस जब वर्ड को मैंने बोल लिया, तब वो मुझे सेक्टर 19 लेके गया, और वहां मैंने थेरेपी ली। थोड़ी सी पॉजिटिविटी वहां से मिली, फिर टीसा की मीटिंग में गया। तो दोस्त, इस चीज का कंक्लूजन जो नजर आता है वो आता है कि आपको एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, सुभाष। आप एक स्टेप लेके देखो, अपने आप में वो साहस जरूर आएगा, 100% वो साहस आएगा। और अगर उस साहस को आप डायरेक्ट नहीं जंप करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं सीधे मार्केट में क्यों कूदूं, तो कम से कम जिससे आप ठीक से बोल पाते हो उसके सामने तो आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीलॉग बनाने की, कुछ बनाने की। पहले आप छोटे स्टेप से स्टार्ट करो, फिर उस बड़े स्टेप में जाओ। यस सर। ठीक है? और एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा ट्राई करो समझने का, टीसा से। और अगर गजेंद्र को कॉल कर सकते हो, मेरे को कॉल लगा सकते हो। आई थिंक जो भी यहाँ पे मेंबर हैं जिनको एक्सेप्टेंस के बारे में पता है, आप उनसे कांटेक्ट करो। कैसे अपने आप को सेल्फ एडवर्टाइज करना है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरेगा, उसके बाद आप ये चीज कर पाओगे। बस सुभाष, फॉर ऑल द पीपल, इवन
अगर आप आज एक स्टैमरर ना भी रहते, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी होते और आके मेरे से ये क्वेश्चन पूछते ना, तो मेरा और उस मतलब इस मीटिंग में शायद मैं भी एक स्टैमरर ना रहता, तो मैं भी आपसे यही जवाब बोलता, यही बोलता कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। और एक स्टेप जैसे आप आगे रखोगे, 2 स्टेप आपको ऊपर वाला अपने आप आगे बढ़ा देगा। ठीक है? यस सर। सुभाष, यस, ओके ऑल द सर, बेस्ट। थैंक यू। और आई वांट दैट कि आप अगला व्लॉग या फिर जो भी बनाते हो, आप जल्दी से एक रिकॉर्डिंग बना के आप सेंड करो। ठीक है? आप ओके कुछ ओके। भी आप व्लॉग करो, कुछ भी करो, एंड प्लीज़ सेंड दैट फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ योर व्लॉग टू मी। सो ओके ऑल सर, द थैंक यू। Okay. Thank you, Shubhas. थैंक यू। Okay. Thank थैंक you so यू। much, Vishal, for your time. Okay, थैंक यू time and हाँ, हाँ, everything. And we have reached our end to our session. हाँ। Yeah. So that's all today. And again, once again, thank you so much for coming here. Okay. Thank you, Gajendra, for the giving me this awesome opportunity, because it's always feel special that whatever you have learned from Tisa, it's now the time to give back to the people. And giving this opportunity to me, it's a great thing. So again, thanks to Gajendra and Tisa both. Thank you.